Hello students, in this lecture we will continue with the partial differential equations. In the previous lecture we have learnt about order and degree of partial differential equation. Here we will discuss about what are linear and non-linear partial differential equations and how to form partial differential equation by eliminating arbitrary constant. First, we have a definition of linear and nonlinear partial differential equation. A partial differential equation is said to be linear if a dependent variable and its partial derivative occur only in first degree and are not multiplied together. Then we say differential equation is linear partial differential equation. Otherwise, we will call the differential equation as non-linear partial differential equation. किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर कहेंगे कि अगर उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स प्रेजेंट है तो वो डिग्री 1 में प्रेजेंट हो, मींस उनकी पावर 1 हो. अगर उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है वो भी डिग्री 1 में हो. पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर का भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर का भी हो सकता है, मींस उनकी पावर 1 हो. एंड डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव का प्रोडक्ट भी प्रेजेंट ना हो. उस केस में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कहेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अदरवाइज वी विल कॉल्ड एज non-linear partial differential equation. Now here we have some examples of linear differential equation. This is partial differential equation in independent variables x and y. This first order derivative has power 1. This first order derivative also has power 1. So this is linear partial differential equation. Now in this example, this is first order partial derivative of z with respect to x and power of this derivative is 1. This is second order partial derivative of z with respect to y and power of this derivative is 1. So this is also a linear partial differential equation. In this example, we have here second order partial derivative of z with respect to x. Here we have a third order partial derivative of z with respect to y and power of these derivatives are 1. So this is linear partial derivative differential equation. Examples of non-linear partial differential equation are curly z by curly x square plus curly z by curly y square equals to x plus y. Here we have first order partial derivative of z with respect to x, but power here is 2. And this is also first order partial derivative of z, but power again here is 2. So this is non-linear partial differential equation. In this example, here we have partial derivative of z with respect to x is of first order, but here we have multiplication of dependent variable and its partial derivative. So this is non-linear partial differential equation. Also here we have multiplication of dependent variable with itself. So again from here we can say this is non-linear partial differential equation because dependent variables की power भी 1 होनी चाहिए, डेरिवेटिव्स की पावर भी 1 होनी चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. उस केस में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कहेंगे लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर. नेक्स्ट we will use some notations in throughout the book. Let z be a function of x and y, means x and y are two independent variable and z is a dependent variable that depends on x and y. Then we can find out these derivatives curly z by curly x, curly z by curly y, curly 2z by curly x square, curly 2z by curly y square, curly 2z by curly x, curly y. We will denote these derivatives by p, q, r, p, s. That is curly z by curly x को हम p से डिनोट करेंगे, curly z by curly y को q से, curly 2z by curly x स्क्वायर को r से डिनोट करेंगे,
कर्ली टू जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई को एस से डिनोट करेगी एंड कर्ली टू जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर को टी से डिनोट करेगी। आप ये ध्यान रखेगी, हमने पी क्यू आर एस टी सिंबल्स यूज किए हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स को डिनोट करने के लिए। Throughout the book we will use this notation. Next we have formation of partial differential equations. We have two methods of formation of partial differential equation. First by eliminating arbitrary constant and second by eliminating arbitrary function. Okay, now we will discuss about formation of partial differential equation by elimination of arbitrary constant. One thing you have to keep in mind that we will eliminate arbitrary constants, not fixed constants. The method will be like this. We have given a function or relation in the variable x, y, z. A and b are arbitrary function. Here z is dependent variable. Z is a function of x and y. X and y are independent variables. A and b are arbitrary constant. If we differentiate this relation with respect to x, हम यहाँ पर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म विल बी कर्ली f बाय कर्ली x. कर्ली f बाय कर्ली x, देन हम कर्ली x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा. देन नेक्स्ट टर्म शुड बी कर्ली f बाय कर्ली y. पहले f को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे फिर y को x के रिस्पेक्ट में. पर हम जब y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे बिकॉज y इज नॉट डिपेंडेंट ऑन x, सो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. नेक्स्ट टर्म विल बी कर्ली f बाय कर्ली z इनटू कर्ली z बाय कर्ली x. पहले हम f को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी विल डू डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x. नेक्स्ट टर्म शुड बी कर्ली f बाय कर्ली a एंड कर्ली a बाय कर्ली x. पर जब हम कर्ली a का कर्ली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हमें 0 मिलेगा क्योंकि a कांस्टेंट है. नेक्स्ट टर्म कर्ली f बाय कर्ली b इनटू कर्ली b बाय कर्ली x. पर जब हम अगेन b को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वी विल गेट 0. सो सिर्फ दो ही टर्म्स हमें मिलेगी. फर्स्ट टर्म जब हम f को x के रिस्पेक्ट में करेंगे देन x को x के ही रिस्पेक्ट में करेंगे एंड नेक्स्ट टर्म जब हम f को z के रिस्पेक्ट में करेंगे और z को x के रिस्पेक्ट में करेंगे. Other derivatives will be 0. Now we have substituted p in place of curly z by curly x because we are using notation that we can replace curly z by curly x by p. Now again differentiating this equation 1 with respect to y. जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन वी विल फॉलो द सेम प्रोसीजर. पहले f को x के रिस्पेक्ट में करेंगे देन x को y के रिस्पेक्ट में करेंगे. जैसे ही हम x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वी विल गेट 0 बिकॉज x इज नॉट फंक्शन ऑफ y. देन नेक्स्ट टर्म विल बी कर्ली f बाय कर्ली y एंड देन y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. जब हम y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वी विल गेट 1. नेक्स्ट टर्म इज कर्ली f बाय कर्ली z एंड कर्ली z बाय कर्ली y. Next term should be curly f by curly a and then curly a by curly y. Again जब हम a को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे we will get 0. Next term is curly f by curly b and then curly b by curly y. जब हम b को y के रिस्पेक्ट में करेंगे we will get 0. सिर्फ दो ही टर्म्स हमें मिलेगी. फर्स्ट टर्म जब हम f को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड नेक्स्ट टर्म जब हम f को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. That is we can see from here that is curly f by curly y and curly f by curly z into curly z by curly y equals to 0. We can substitute q in place of curly z by curly y by using the notations which we have discussed above. Now we have three equations. First which is given to us relation between x, y, z and ab. Second equation which is obtained by differentiating given relation 1 with respect to x. Equation which is obtained by differentiating equation 1 partially with respect to y. अब इन तीन इक्वेशन में से हम a और b को एलिमिनेट करेंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी that will be partial differential equation of the form
this. That will be function of x, y, z, p and q. हम इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में से a और b को एलिमिनेट करेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे, तो जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी दैट विल बी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स करने से ही आपने गिवन इक्वेशन थी उसको आपने एक ही बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, अगर इन तीन इक्वेशन से ही हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाते हैं तो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो फर्स्ट ऑर्डर की आएगी. बट अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद x और y के रिस्पेक्ट में इन तीन इक्वेशन से हमारे a और b एलिमिनेट नहीं होते, या फिर हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स अगर ज़्यादा है इन तीन इक्वेशन से एलिमिनेट नहीं होते, तो हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे. then in that case we may have partial differential equation of second order or higher order. This depends on number of arbitrary constants and number of independent variable. We will continue with this in the next video. Thank you.